Hey, this is Dhaval Kumar. Welcome back to PIXATIVE. Today I'll show you how to remove this distraction from this picture. So what are you waiting for? Let's make it. So welcome back once again. मेरे पास यहाँ पर ये इमेज है, लेकिन इस पिक्चर में यहाँ पर ये जो सेफ्टी ग्रिल्स लगाई गई है वो आज हम रिमूव करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ न्यू लेयर, ताकि हम इसको बाद में भी कभी भी एडजस्ट कर सके, वो काम हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव हो. उसके बाद यहाँ पर हम दो टूल के साथ आगे काम करेंगे, कंटेंट अवेयर टूल और स्पॉट डीलिंग ब्रश टूल. तो सबसे पहले हम स्पॉट डीलिंग ब्रश टूल से शुरुआत करते हैं. सो सिलेक्ट द स्पॉट डीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम दिस मेन्यू. देन आफ्टर ब्रश साइज हम अपने एरिया के हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे, लेकिन हार्डनेस जो है वो अराउंड 30 to 40% यहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इमेज 30% इज गुड. स्पेसिंग इज 1%. एंड देन आफ्टर मोड इज नॉर्मल एंड टाइप कंटेंट अवेयर सिलेक्ट एंड सैंपल ऑल द लेयर. हमने जो ये न्यू लेयर बनाया है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, वो ऊपर हमें अलग से मिले, नीचे का लेयर से भी वो सैंपल पिक करेगा. सो सिलेक्ट दिस न्यू लेयर एंड स्टार्ट फ्रॉम ईयर. ब्रश साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए. ये हमारे ग्रिल का जो ये वायर फ्रेम है, आप जो भी रिमूव करना चाहते हैं उससे हमारा ब्रश थोड़ा बड़ा होना चाहिए. एंड उसके बाद सिंपली ड्रॉ द लाइन एंड सी रिमूव. एंड उसके बाद सिंपल वंस क्लिक हियर एंड वंस हियर, गॉन. क्लिक हियर, press and hold the shift key and click here, gone. Click here once and press and hold the shift key and dab here, gone. Click here, press and hold the shift key and dab here. Don't worry about this horizontal line, we will repair it later. Select here, gone. Click here, press and hold the shift key and tab here. Click here, press and hold the shift key and tab here. And same process करनी है. Click here once and अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस एरिया के ये हमारा ये जो ट्राइपॉड है कैमरा का, वो हमें कंटेंट नहीं करना है. सिंपली डैब हियर, वहाँ पर हम अलग टेक्निक से रिमूव करेंगे. सिंपली क्लिक हियर, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड डैब हियर. डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल टेक केयर दिस लेटर. डैब, रिमूव. सो मैं यहाँ से वीडियो स्पीड अप कर रहा हूँ टिल द नेक्स्ट प्रोसेस. नाउ अब यहाँ पर ये एरिया थोड़ा बड़ा है, तो हमें उस हिसाब से अपना ब्रश साइज चेंज करना होगा. बाकी प्रोसेस सेम रहेगी. एंड नाउ अब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रिमूव करेंगे. सिंपल डैब हियर वंस एंड प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड डैब हियर. Just dab once here and once here and gone. This man is taking the picture of this bird. See, this is the before, this is the after, this is the before, this is the
आफ्टर। अब हम इस फोटोग्राफर के आगे जो सेफ्टी ग्रिल्स लगाए हुए हो वो कंटेंट अवेयर फील्ड से रिमूव करेंगे। तो हाउ टू डू दिस, सी दिस वीडियो till the end. So select this layer and take the new layer above this and hold the alter option and pick this area and simply maybe flow is little bit down and see this is the before, this is the after. Same work done also here, हमें वही काम यहाँ पर भी करना है। सिंपल, होल्ड द ऑल्टर ऑप्शन, सिलेक्ट दिस एरिया, यहाँ से ये शो ओवरले क्लिक कर दिया ताकि आपको अलाइन करने में आसानी रहे। सी पहले ये हमें प्रीव्यू नहीं दिखा रहा था। इससे गो टू स्पॉटिलिंग टूल and we remove this like this. जब आप स्पॉटिलिंग ब्रश टूल के साथ काम करते हो क्लोज ऑब्जेक्ट के साथ तब ऐसा होता है, इसलिए क्लोन स्टैम्प टूल के साथ यहाँ पर बेहतर रहेगा। So very close this area. Pick the pattern from here and put it here. Then now pick from here and I hope you got the idea. So enjoy the speed up. It's not a game, it's a rich thing.
सो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिक्चर. आई completely remove the distraction like this. See, this is the before, this is the after. ये जो है वो मैंने क्लोन स्टेम टूल से रिमूव किया है और ये जो है वो स्पॉटेलिंग से रिमूव किया है. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट. दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर. इस सेफ्टी ग्रिल्स को रिमूव करने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे. यह कम्प्लीटली आपके इमेज के ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फ्रॉम द रिमूव डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनी पिक्चर. I hope this tutorial is helpful for you. If you like it, please like, share and comment below. And don't forget to subscribe and ring the bell icon. Stay tuned till my next one. Take care.